सो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 वाटर ज्योग्राफी चैप्टर। ठीक है, लाइन टू लाइन स्टार्ट करते हैं रीडिंग। व्हेन यू थिंक ऑफ द वाटर, व्हाट इमेजेस come to your mind? You think of rivers, the waterfall, the pitter patter of the raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in the rain puddles. By noon the puddles vanish, and where does the water go? The sun's heat causes evaporation of water vapors. When the water vapors cool down, it condenses and form clouds. From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. है ना, लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में गिरती है बारिश, या तो लिक्विड होती है या तो स्नो और स्लीट के फॉर्म में गिरती है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट फॉर्म सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। सो द कंप्लीट साइकिल from conversion of water into the vapors to condensation, then cooling down of the vapors, and then in the form of precipitation it falls on the ground, sea, lakes, है ना। This complete cycle, hydrological cycle, is known as the water cycle. Our earth is like a terrarium. The same water that existed centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. The major sources of the fresh water are the rivers, ponds, springs, and glaciers. The ocean bodies and the seas contain salty water. The water on the ocean is salty or saline as it contains the large amount of dissolved salts. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat. तो जो सॉल्ट हम खाते हैं उसका जनरली केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड। उसका फॉर्मूला था NaCl। Na इज सोडियम, क्लोराइड का फॉर्मूला Cl। सो NaCl से उसको रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री के टर्म्स में। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, वी ऑल शो द 3/4 of the water surface is covered by the water. If there is more water than the land on the earth, why do so many countries face water scarcity? Is all the water on the earth available to us? The following table gives the distribution. अब obvious है कि there is a 3/4 of the part is covered with the water, but still there are many countries which still face the problem of scarcity of the water because we don't have the fresh water, potable water which is fit for drinking. We have a mass amount of water in the form of salty water which is not fit. Water distribution can be demonstrated by a simple activity. You can read it. Water is absolutely essential for survival. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. Now don't you think we are wasting a precious resources when we use water carelessly? So always keep in mind, don't waste the water. It's a very precious resource. Next, ocean circulation. There is something magical about walking bare feet on the seashore. The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabird, the smell of that salt in the air, and music of the waves. Everything is so fascinating. Unlike the calm waters of the pond and lakes, ocean water keep moving continuously. It is never still. The movement that occurs in the oceans can be broadly categorized as waves, tides, and currents. These are the three terminologies. The movements in the oceans like waves, tides, and currents. First, waves. When you are playing throw ball on the beach and the ball falls on the water, what happens? It's fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. When the water on the surface of the ocean arises and falls alternately, they are called as waves. वेव्स क्या है? जैसे हम बॉल गलती से अगर चली जाती है हमारे उसमें कोस्टल रीजन में, अगर हम खेल रहे हैं तो आसपास जो भी हमारा वाटर बॉडी और उसके थ्रू वापस से वो हिट बैक होकर के शोर की तरफ आती है, दैट इज डन बाय द मूवमेंट ऑफ वेव्स. ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड फॉर्म्स ह्यूज वेव्स. They may cause tremendous destruction as earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslide can shift large amount of ocean water. As a result, huge tidal wave called tsunami. So that wave which converts into a dangerous form in the tidal form, that particular term is known as tsunami. That may be as high as 15 meters formed. The largest tsunami ever measured was 150 meter high. These waves travel at a speed of more than 700 km per hour. 700 km per hour means 2 times the speed of bullet train. The tsunami of 2004 caused
widespread damage in the coastal areas of India. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. So ये back 2004 में इंसिडेंस हुआ था और उसके वजह से क्या हुआ था, जो इंदिरा पॉइंट है, लोएस्ट सर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का अंडमान निकोबार में, वो सबमर्ज्ड हो गया था, कम्प्लीटली डूब गया था. नेक्स्ट, टाइड्स. द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड. मतलब एक वेव की फॉर्म बनती है ना, ऊपर गया और वापस से नीचे आया, ऊपर गया, जैसे वेव फॉर्म हम पढ़ते हैं उस फॉर्म में टाइड्स, अगर मूवमेंट हो रही है वाटर बॉडी की तो उसको टाइड कहेंगे. इट्स अ हाई टाइड व्हेन द वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग हाईएस्ट लेवल. इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू द लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर. The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. The water on the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. During the full moon and new moon, the sun and the moon and the earth are in the same line and the tides are highest. जब वो एक ही लाइन में होते हैं सन, मून और अर्थ, तब मैक्सिमम फोर्स लगता है ग्रेविटी का और उसके वजह से हाई टाइड्स की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. These tides are called spring tides, but when the moon is in the first and the last quarter, the ocean water get drawn in diagonally opposite directions by gravitational pull of sun and earth, resulting into the low tides. जब वो diagonally force लगता है, then it results into the low tide. These tides are called neap tides. तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. They raise the water level close to the shores. This helps the ships to arrive in the harbor more easily. The high tide also help in fishing. Many more fishes come closer to the shore during the high tide. This enables fishermen to get plentiful catch. The rise and fall of the water due to the tide is being used to generate electricity in some places. तो tides बहुत एडवांटेज में भी इसको यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस और टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसके वजह से डायनामो को मूव करवा करके the electricity can be generated. Now, ocean currents are the stream of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. The ocean current may be warm or cold. Generally, the warm ocean current originate near the equator and move towards the pole. Obviously, equator hottest region है तो वहाँ पर warm currents बनेंगे. The cold currents carry water from polar or higher latitudes to the tropical or the lower latitudes. The Labrador ocean current is cold current while the Gulf stream is a warm current. Important है, Labrador ocean current cold current है, Gulf stream is the warm current. The ocean current influence the temperature condition of the area. Warm current bring about warm temperature over land area. The area where the warm and cold current meet provide the best fishing ground of the world. Seas around the Japan and the eastern coast of North America are such example. जहाँ पर फिशिंग के लिए बहुत ही अच्छी इन्वायरमेंट होती है, अच्छा एक कैच एरिया होता है, वहाँ पर फिशरमैन्स को मैक्सिमम गेनिंग होती है फिशेस की. द एरिया वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन. बट उसका एक साइड इफेक्ट क्या हो जाता है कि वहाँ पे एक फॉगी सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, क्लाउडी सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, उसके वजह से नेविगेशन ऑफ शिप्स या नेविगेशन ऑफ इवन द एरोप्लेन्स अराउंड सराउंडिंग देयर एरियाज बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस होती है और कई बार उसके वजह से मूवमेंट को रोकना भी पड़ता है. सो आई होप chapter 6 is absolutely clear. You can revise quickly. Thank you for watching this video. Bye bye.